So we have already seen vitamins, chemistry of vitamins, and we was discussing about the vitamins. We have already seen the vitamins, but I would like to revise it in a quickly in a 10 or 15 minutes, and then we will take minerals. So nobody is going to explain you vitamins for at least 4 5 lectures. So a lot of classes they used to complete a vitamin in a one lecture only, but as this is not a situation with me, I used to take in the detail. So you might have seen this. Okay, in the last session we have seen this. So you can see these are nothing but the vitamin and their antagonist. Okay, vitamins and their antagonist. You can see what is the antagonist for vitamin K, dicomerol and warfarin. They are the antagonist for vitamin K. Thymine, pyrimethamine and oxythymine. Pyrithymin, thyminase and oxythymine. They are the antagonist to the thymine vitamin. Okay, galactoflavin is antagonist of riboflavin. Isoniazide and this deoxypyridoxine, that is antagonist to the vitamin B3, niacin. Niacin or nicotinic acid or nicotinamide, right? Now, for biotin, avidin and desthiobiotine, they are the antagonist. Now, these aminoterine, methotrexate, trimethoprim, they are known as a folic acid antagonist. Okay, sulfonamides, they are antagonist to PABA. PABA is not an amino acid, but it is an essential component. Okay, so we'll see the next. Again, I have summarized these vitamins. They are very important biochemical function and deficiency disease yesterday only. So you can see lipid soluble vitamins in that you have vitamin A, D, E, K. So out of that vitamin A, so what is the ring present in the vitamin A? You just remember beta ion ring is there. Beta ion ring. Beta ion ring is there in a structure of vitamin A. विटामिन ए के स्ट्रक्चर में बीटा आयोनिन रिंग होता है, उसके बाद में आइसोप्रेनाइड यूनिट्स होते हैं. ओके, बीटा ionic ring, beta ionic ring, and this vitamin A has a 3 vitamins. Vitamins means they are the similar compounds. Retinol is there, retinal is there, and retinoic acid is there. Now, all these three will have different functions. If you want to read in the detail, you can read. Retinol is the alcohol form, retinol is aldehyde form, and retinoic acid is the acid form. Now, what is the main biochemical role of vitamin A? So, main biochemical role of vitamin A is nothing but it is a component of visual pigment. Vitamin A is the component of visual pigment. Visual pigment in the retina. It also regulates the gene expression. Gene का जो expression होता है वो भी regulate करता है. And also responsible for the cell differentiation. Cell का जो growth होता है, cell का जो production होता है, उसके ऊपर भी important function है. And also beta carotene will act as an antioxidant in your body. Deficiency of this vitamin A result in the night blindness. Dim light में वो properly देख नहीं सकता. Xerophthalmia is complete absent of sights. मतलब दिखना ही बंद हो जाएगा उसको. Keratinization of skin आपका खुरदुरा हो जाएगा. Keratin का deposit हो जाएगा skin. Right? Vitamin D is nothing but the cholecalciferol. Right? So again, vitamin D has a 3 form: ergosterol, 7-dihydroxyalcosterol known as a provitamin D1, 1,12 dihydroxycholic acid known as calcidiol, 1,25 dihydroxycholic acid known as a calcitriol, 7,1 hydroxycholic known as a calcidiol, and 1,12 dihydroxycholic acid known as a calcitriol. Now in the vitamin D structure में क्या आता है? Steroid ring. It is a steroid ring in the structure. Now role क्या है उसका? Vitamin D is very important for absorption of calcium and phosphorus. So it causes the calcification of bones. Bone में deposit करता है calcium. कौन करता है? Vitamin D. ठीक है? Maintenance of calcium balance in the body. This is the main role. We have already seen in the detail, but again I have summarized this. Now you know that in the children, if there is deficiency of vitamin D, it causes rickets. Question उसके ऊपर आ चुका है. In the children, it causes a disease known as rickets. Okay? So what is ricket? There is a poor mineralization of bone. मतलब वो जो बच्चा है उसके bones का
प्रॉपरली कैल्सिफिकेशन नहीं होता है. बिकॉज ऑफ दैट द चाइल्ड विल हैव बेंट बोन. जो लॉन्ग बोन होते हैं, वेट बेरिंग बोन होते हैं, तो उसका वो वेट बेरिंग बोन जो है ना बेंड हो जाता है. दैट इज नोन एज द rickets. नाउ in the adults it will cause osteomalacia. In the adult it will cause osteomalacia. What is osteomalacia? That is a demineralization of bone. मतलब यहाँ पे कैल्शियम बोन से निकाला जाएगा. यहाँ पे कैल्शियम बोन में कैल्सिफिकेशन कम होता है. पुअर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स में कैल्सिफिकेशन कम होता है, फॉस्फोरस कम जाता है उसमें. नाउ विटामिन ई is known as a tocopherol. In this tocol ring is there. Tocol is the common name. Now what is tocol ring? 6-hydroxychromone ring. It is a 6-hydroxychromone, also known as a tocol ring, and there are 3 side isoprenide units. यहाँ पे टोकॉल रिंग होता है, दैट इज 6-hydroxychromone रिंग, तो उसमें 3 आइसोप्रेनाइड यूनिट होता है. तो अपन इसको बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर. एंड इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन फंक्शन. सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है, इंटीग्रिटी है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है. एंड विटामिन ई इज आल्सो एंटीऑक्सीडेंट. नॉर्मली इट्स डेफिशिएंसी डज नॉट ऑकर, बट अगर डेफिशिएंसी होता है तो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है. Neurological dysfunction. Then importance, sterility in the male, importance, and ataxia. Vitamin E deficiency also there in a ataxia. Ataxia means the patient is not able to have balance and coordination. जो जो disease अभी मैं सफर कर रहा हूँ, that is known as ataxia. So ataxia means it is a neurological disorder. So that is because of the variety of reason. It may be because of the genetic reason. For example, pediatric ataxia is there, that is genetic origin. There is then another reason, ataxia is also because of the shock to the brain. Then ataxia is also because of the hematoma, blooding अगर clot अगर हो गया brain में तो ataxia भी हो सकता है. Again ataxia is also because of the infection, जो मेरे केस में होता है. Right? So ataxia is also because of the infection, right? Post encephalitis. So ataxia may be because of the drugs also. Most of the anti-epileptic drug they have adverse effect of ataxia. You can see अपन ने देखा है phenytoin, valproic acid, all these drugs they have potential to cause the ataxia, है ना. Even diazepam also. So it is also the adverse effect of few anticonvulsant drugs. And regular use of these anticonvulsant drugs may cause ataxia. Anticonvulsant drug का अगर आपने long term use किया तो ataxia may cause सकता है. It can cause ataxia, but it is a rare. Okay. The neurological dysfunction. So these are again vitamin A, vitamin D, vitamin. I hope I am audible to you clearly. Next is vitamin K. You know that vitamin K is very important for blood clotting. Vitamin K is known as a. There are 3 forms of vitamin K. Vitamin K1, K2, and K3. K1 is known as a phytoquinone. K2 is known as a menaquinone, and K3 is known as a menadione. So out of that, vitamin K3 जो होता है, that is a synthetic form. And in the vitamin K1, K2, you have naphthoquinone ring with the isoprenide side chain. But in the vitamin K3, you have only naphthoquinone ring. There is no isoprenide side chain. Okay. And vitamin K1, K2, they are lipid soluble vitamins. And vitamin K3 is nothing but the water soluble derivative. Okay. So vitamin K3 होता है synthetic form होता है, and वो water soluble होता है. So ring present in the vitamin K is nothing but the naphthoquinone. You have to remember ring present in the vitamin K, naphtha. Very important for blood clotting. So actually this vitamin K, oxidation of vitamin K is coupled with the activation of blood clotting factors. We have already seen when we were discussing about the anticoagulant and all that. Okay. So again very important. Okay. So obviously the deficiency of this vitamin K leads to bleeding and hemorrhagical disease. अगर विटामिन K का डिफिशियंसी होता है आपको तो ये क्या होगा, हिमोरियोलॉजिकल डिसीज हो सकते हैं आपको, या फिर आपको ब्लीडिंग हो सकता है. नेक्स्ट वन इज विटामिन सी. विटामिन सी इज नोन एज अ वाटर soluble vitamin, non B complex water soluble vitamin. So its structure is similar to your monosaccharide. So its structure is like a hexose. It is a hexose derivative. Hexose derivative होता है. And what is the? It is known as ascorbic acid. Or L form is active. Remember, L ascorbic acid is active. Now
It acts as an antioxidant in the body. It is a reducing agent and also is a coenzyme for hydroxylation of amino acid like proline and lysine. Proline lysine का hydroxylation करने के लिए विटामिन सी लगता है as a cofactor. Also, it is a cofactor for hydroxylation of proline and lysine in the collagen synthesis and also helps in the absorption of iron. So you might have seen अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसको तो आयरन का सप्लीमेंट अगर चलता है तो आयरन प्लस फॉलिक एसिड रहता है लेकिन उसमें विटामिन सी भी है ना मतलब क्या है कि फेरस एस्कॉर्बेट एक नया सॉल्ट आया है फेरस एस्कॉर्बेट मतलब क्या है इट इज अ सॉल्ट ऑफ फेरस विद एस्कॉर्बिक एसिड बिकॉज एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी इंक्रीजेस द एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन कॉजेज द पुअर वुंड हीलिंग आपका जख्म जो है जल्दी ठीक नहीं हुआ पुअर वुंड हीलिंग लॉस ऑफ डेंटल सीमेंट आपको जो इनेमल है उसके अंदर डेंटल सीमेंट रहता है वो उसका लॉस हो जाएगा ओके देन इट आल्सो कॉजेज सबक्यूटेनियस हेमोरेज सबक्यूटेनियसली हेमोरेज करेगा वाटर सोल्युबल विटामिन बी1 बी कॉम्प्लेक्स में थायमिन आता है थायमिन ओके इट इज नोन एज एंटी बेरी विटामिन एंटी बेरी विटामिन तो है ना तो याद रखना है थायमिन इसमें रिंग कौन सा है स्ट्रक्चर सो इट हैज अ थायाजोल प्लस pyrimidine rings thiazole plus pyrimidine and biochemical load क्या है it acts as a coenzyme for different reactions in the carbohydrate metabolism so for example coenzyme for alpha ketoglutarate in the Krebs cycle okay alpha ketoglutarate dehydrogenase then trans ketolase it has a role in the nerve conduction also it has a important role in the nerve conduction so deficiency of this vitamin b1 causes the very it may be either dry beriberi or it may be either wet beriberi another deficiency disorder is nothing but the Wernicke-Korsakoff syndrome इसके ऊपर क्वेश्चन आता है Wernicke-Korsakoff syndrome thiamine deficiency is most commonly found in the alcohol addict है ना जो बेवड़े वाले लोग होते हैं ना बेवड़े वाले 90 पंटर में thiamine का deficiency होता है right because alcohol decreases the absorption of thiamine and that's why नेक्स्ट आता है राइबोफ्लेविन विटामिन बी12 सो रिंग याद रखना है आपको इट हैज अ आइसोएलेक्साजिन प्लस sugar is there known as a D-ribitol isoalexazine ring plus D-ribitol sugar now it acts as a coenzyme for oxidation reduction reaction so it has some coenzyme like APD flavin adenine dinucleotide and APDH2 flavin adenine nucleotide flavin adenine dinucleotide okay it is also prosthetic group for flavoproteins so deficiency of vitamin B12 causes chillosis chillosis मतलब okay breaking of your lips and corners of your mouth glossitis and dermatitis glossitis मतलब आपका गले का इन्फेक्शन वगैरह होता है आपको dermatitis means so these are the again vitamins their biochemical role and deficiency symptoms we have already seen this in detail but just I want to revise again now next one is a विटामिन B5 नोन एज पेंटोथेनिक एसिड पेंटोथेनिक एसिड के नाम में क्या है उसमें पेंटेनोइक एसिड है एंड इट इज अ पेंटेनोइक एसिड प्लस बीटा एलानिन स्ट्रक्चर में याद रखना है पेंटेनोइक एसिड प्लस बीटा एलानिन अगेन बायोकेमिकल रोल क्या है इसका इट इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए एंड आल्सो ट्रांसफर द असाइल ग्रुप सो असाइल कैरियर प्रोटीन फैटी एसिड सिंथेसिस में लगता है मेटाबॉलिज्म में लगता है सो विटामिन B5 is required in the fatty acid synthesis and metabolism. Normally, deficiency symptom is none. Means normally deficiency of this pantothenic acid does not occur. Now, vitamin B3 is known as a niacin, niacin or nicotinamide or nicotinic acid. Okay, so IPAC name होता है उसका nicotinic pyridine 3 carboxylic acid. Now, okay, so ring is nothing but the pyridine in the structure. काम क्या है उसका it is a coenzyme for oxidation reduction reaction it has its cofactor like this nicotinamide adenine dinucleotide NADH and NADPH these are the cofactor for various oxidation reduction reaction deficiency अगर होता है तो क्या होता है पेलेग्रा पेलेग्रा मींस क्या photosensitive dermatitis that is a pellagra photosensitive dermatitis and also causes the depressive psychosis deficiency now next one is vitamin B6 known as the pyridoxine उसमें भी pyridine ring होता है coenzyme for decarboxylation of amino acids and also required for the glycogen phosphorylase enzyme
The cofactor for decarboxylation of amino acids, cofactor for glycogen phosphorylase. It has a role in the steroid hormone action. Again, इसका deficiency deficiency of this vitamin B6 result in the anemia, peripheral neuropathy, and disorders of amino acid metabolism. It also can cause convergence. अगर विटामिन B6 का deficiency हो गया तो आपको epilepsy हो सकता है. Now vitamin B7 is known as a biotin and it has a ring imidazole which is fused with the thiopin ring. Imidazole and thiopin ring combination होता है. Okay, role क्या है? Again एक actor as a coenzyme for metabolic reaction. Okay, in the gluconeogenesis coenzyme for different reaction in the gluconeogenesis and fatty acid synthesis. Deficiency results in the impairment of lipid and carbohydrate metabolism. Can cause anemia and dermatitis. Vitamin B9 is known as a folic acid and folic acid में क्या होता है? 3 कंपाउंड होता है, अपन ने डिटेल में देखा है. Pteridine, para-aminobutyric acid and glutamic acid. So again it is a coenzyme for one carbon chain reaction, one carbon transfer reaction, or you can say one carbon fragment transfer reaction. It results in the megaloblastic anemia. Folic acid deficiency of folic acid results in the megaloblastic anemia. If deficiency is there in a pregnant woman, that can lead to neural tube defect. We have already seen. Now next we'll see. Next is nothing but the next we'll see minerals. Vitamins and minerals. It is a one chapter in your biochemistry, right? So minerals, you can expect only one question from these minerals, but still we'll see. They are the inorganic component of your body. Minerals are the inorganic component of your body. It consists of ions. Your body has a sodium ion, potassium ion, calcium, phosphate, sulfate. A lot of elements are required. Let's say, for example, copper is required for the metabolic reaction. Copper is a cofactor for certain enzymes. And magnesium is a cofactor, right? Right. So likewise, that inorganic component of your body known as a minerals. Okay, they are present in a small proportion. They are present in a small portion in your body. For example, okay, calcium is present up to 2% of your body weight, 2%. Okay. Then cobalt is present in a very less amount, 0.00004%. So minerals, they are the inorganic component of your body. They may be present in a small proportion. Okay, like this. Okay. Then next is remember they have important role. Okay, they have important role in the body. For example, as I told you, certain metabolic reaction requires a cofactor. Copper लगता है उसमें, manganese लगता है उसमें, है ना, ferrous लगता है उसमें. So these minerals, they are very important for your body. Some of them are required for the structural component of your body. Say for example, calcium, phosphorus. They are required for the bone and teeth. Right? So certain other elements required for the metabolic reaction. So they are important and they are absolutely essential for existence of your organism. For example, calcium is required for the calcification of bone. Calcification of bone is done by calcium. Calcium is also required for the blood coagulation. Okay, sodium, calcium, and potassium. They are required for the chloride. They are required for the neuroimmunal transmission. आपने देखा है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जाने के लिए आयंस का एक्सचेंज होता है वहाँ पे. Depolarization, repolarization, then hyperpolarization. That is only because of the movement of sodium, potassium, or calcium, or chloride. So these are required for neuroimmunal transmission also. Then they are very, very important. They maintain your acid and base balance, acid base equilibrium, fluid balance, and also they are responsible for the osmotic pressure, osmotic regulation. Right? These are the functions of mineral in the body. They are also important component of biological components. Some of the elements, they are found in the proteins of your body. For example, in the hemoglobin, आपकी hemoglobin में क्या है, फेरस होता है, right? थायरोक्सिन जो होता है हार्मोन, थायराइड हार्मोन, उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है. सो इंसुलिन के साथ में जिंक दिया जाता है. विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है. सल्फर इज प्रेजेंट इन द
vitamins also, as well as in the amino acid also. Okay, so lipoic acid, coenzyme A, so they are having important component of, they are important component of biological compounds like hemoglobin, insulin, thyroxine, vitamin B12. Okay, sulfur is present in the, also vitamin in the vitamin, also in the amino acid also. लिपोइक एसिड में सल्फर होता है, कोएंजाइम ए में भी सल्फर होता है, थायमिन बायोटिन में भी सल्फर होता है, राइट. नाउ मिनरल दे एक्ट एज अ कोफैक्टर. कोफैक्टर कौन से मिनरल एक्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल दिस. So these minerals they act as a cofactor. Copper, magnesium, zinc, and potassium. Important constituent of certain enzymes. Okay. So these cobalt, molybdenum, and selenium they are also important component of certain enzymes. Now minerals may be classified depending upon their requirement. कि आपके बॉडी को डेली कितना रिक्वायरमेंट लगता है कौन से मिनरल का, उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है. दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द recommend daily requirement. Okay, recommended daily, okay, requirement. Now they are classified as either macro minerals. Macro मतलब large quantity में लगता है. Macro minerals, so whose recommended daily allowance is around 100 milligram per day. अगर कोई मिनरल आपको 100 मिलीग्राम पर डे लगता है उसको बोलेंगे अपन मैक्रो मिनरल. एंड दे कंस्टिट्यूट अबाउट द 60 to 80% ऑफ बॉडीज इनऑर्गेनिक मटेरियल. बॉडी में जितना इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसमें का 60-70% कौन होता है? मैक्रो मिनरल. सो मैक्रो मिनरल्स दे आर 60 to 80% of total body's inorganic material. So in that you have these ions. Calcium is there, phosphorus, magnesium, sodium, potassium chloride and sulfur. So these are known as a macro minerals. तो इसके एग्जांपल के ऊपर एक क्वेश्चन आता है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ ट्रेस एलिमेंट. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ मैक्रो एलिमेंट. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ माइक्रो मिनरल. ऐसा क्वेश्चन आता है. सो मैक्रो मिनरल में क्या है कि सोडियम, कैल्शियम है ना, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर एंड मैग्नीशियम. ये फॉस्फोरस, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, these are known as macro minerals because they are required in the large quantity, 100 milligram per day. You used to eat salt, so from table salt you are going to get sodium, क्लोराइड, पोटेशियम, है ना. ये सब कहाँ से आता है? ये सब सॉल्ट में आता है. ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द फूड, है ना, डिफरेंट फूड्स. मैक्रो मिनरल्स. एम आई ऑडिबल टू यू? सेकंड इज नथिंग बट द माइक्रो मिनरल्स. माइक्रो मीन्स क्या है? कम क्वांटिटी मिलेगा. कितने कम? लेस देन 100 mg per day. Mineral is required daily less than 100 mg per day. So recommended daily allowance is less than 100 milligram per day. So it is known as a micro minerals. Micro minerals they are also further classified. So first one is essential trace element. Essential trace element. So in that you are going to have iron, copper, magnesium, zinc, molybdenum, cobalt, selenium, and chromium. So iron, copper, manganese, zinc, molybdenum, and cobalt and selenium and chromium. So these elements they are required. Okay? They are also required, but their quantity required is very less. So iron, copper, manganese, zinc, molybdenum, and molybdenum and cobalt, selenium and chromium. इनका क्वांटिटी कम लगता है तो इनको essential trace element बोलते हैं. Essential, but they are having essentiality. So iron is required for the production of your hemoglobin. Copper is also essential for certain metabolic reaction. Manganese is also there. Zinc is also required. Molybdenum, okay. Selenium, chromium. Selenium acts as an antioxidant. Selenium acts as an antioxidant. Now possibly essential trace element. Now why they are not possibly essential trace element? Because they are required for body, but their role is unknown. ये एलिमेंट आपके बॉडी के लिए लगते हैं लेकिन उनको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं कि ये निकल क्यों लगता है, ये कैडमियम क्यों लगता है, बेरियम क्यों लगता है, वेनाडियम क्यों लगता है, किसी को कुछ मालूम नहीं. बस लगता है इतना ही ना, लगता है इसलिए उन्होंने क्या किया, ये इम्पोर्टेंट है लेकिन मालूम नहीं क्यों है, तो उनको बोले पॉसिबली इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट. पॉसिबल इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट निकेल, वेनाडियम, कैडमियम एंड बेरियम. नेक्स्ट होता है आपका नॉन इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट. नॉन इसेंशियल ये लगते ही नहीं लेकिन ये बॉडी में पाए जाते हैं.
बॉडी में पाए जाते हैं. Aluminium, it is aluminum ions, okay. Then lead, mercury, boron, silver and bismuth. So out of that, lead, mercury, boron, aluminum, okay, silver, all these are the toxic, okay. So if they are essential, uh, they are required, they are present in the body, but again their role is not their role is unknown. But if there is excess of these elements in the body, अगर इसका excess हो गया एल्यूमिनियम का, लीड का, मर्क्यूरी का, बोरॉन का, so there is a poisoning. If they are the toxic in nature, okay, they are required in the body, but role is unknown again, okay. And if they are present in the excess amount, it can cause toxicity. They are the toxic elements. I hope you are getting this. समझ रहा है आपको? समझ रहा है नहीं समझ रहा है ना? Minerals. So we'll see individual minerals and their role. First is the element calcium. What is the role of calcium in your body? So obviously they are required for the bone formation, teeth formation, required for the muscle contraction, है ना? So if you are having less calcium in your body, तो आपके बॉडी में अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो आपकी मसल में क्या होता है? फटीग होता है, फटीग. So muscle contraction नहीं होगा. They are required for the nerve transmission, muscle contraction, teeth formation, bone formation. Okay? Now deficiency is in the, okay, in the children it results in the rickets in the children and osteomalacia in the adult. तो आप बोलेंगे सर यही चीजें आपने विटामिन डी के बारे में बोला था. सो ऑब्वियसली विटामिन डी क्या करता है? इट इंक्रीजेस द एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का रोल वही होता है कि एब्सॉर्प्शन बढ़ाएगा, किसका? कैल्शियम का, है ना? तो उसका डेफिशिएंसी होगा तो कैल्शियम का डेफिशिएंसी होगा, इसलिए उसके डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड कैल्शियम के डेफिशिएंसी सिंड्रोम सेम है. सो in the children causes rickets, in the adult osteomalacia. It can cause osteoporosis. Osteoporosis मतलब क्या है? So bone density आपकी बॉडी का कम हो जाएगा. जब आप एक्सरे करते हो बोन का, है ना, तो बोन का स्ट्रक्चर क्लियर रहता है. अगर उसमें अगर कुछ स्पॉन्जी टाइप स्ट्रक्चर दिख गया, so that means your bones are weak, osteoporotic bones. So mostly occurs in the women's more than 35 years. मेनोपॉजल वुमन जो होते हैं उनमें ये osteoporosis most common होता है. Osteoporosis is most common in the woman. Recommended daily allowance कितना है इसका? 0.8 to 1 gram per day. So 800 milligram to 1 gram per day calcium is equal to. Most of the calcium requirement is fulfilled by milk. जब आप चाय पीते हो, दूध पीते हो, कॉफी पीते हो, उसमें मिल्क में कैल्शियम रहता है. So milk and milk products are a good source. Then green leafy vegetables are also good source, and beans are also good source. Now next is the phosphorus. So phosphorus कहाँ पे लगता है आपको? Again phosphorus is required for bone and teeth formation. तो phosphorus एक component होता है. So phosphorus is very important component. Phosphate ions they are important in the nucleotides. So nucleotide देखो आप adenine dinucleotide है ना, adenine, guanine, thymine, cytosine. So phosphate are present in this. Again required for the coenzyme. Nucleotide coenzyme. They are present in the nucleic acid, and high energy phosphates are required. Now in the deficiency, same rickets and osteomalacia. The daily requirement again same 800 milligram to 1 gram per day, and source is nothing but the milk, cereals, green leafy vegetables. Next mineral is the magnesium. So magnesium is also a content of your bone. Bone में ये magnesium होता है, content of bone and teeth. It is a cofactor for enzyme. Lot of enzymes. For example is kinase, glucokinase, hexokinase. उसके लिए magnesium लगता है. You can see in the Krebs cycle. उसके ऊपर Mn plus लिखा होता है. So content of bone, teeth, cofactor for enzymes. Also, okay, deficiency of magnesium results in the neuromuscular weakness and irritation. 300 to 350 milligram per day is the daily required daily required allowance. It is found in the cereals, vegetables and korma foods and milk. Next is the sodium. Sodium कहाँ से आता है आपको? Sodium तो आता है salt में से. Sodium is again it is a component of extracellular fluid. It is a extracellular cation. Sodium is a extracellular cation. It is required for the acid base balance, है ना, उसका काम है. Osmotic pressure is regulated by sodium, and it is also required for muscle function. So
डेफिशिएंसी इज अननोन, सोडियम का डेफिशिएंसी अननोन होता है, एंड सफिशिएंटली इट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द डाइट। अब डेली खाते हो, थोड़ा भी नमक कम है सब्जी में तो फटाक से नमक लेते हो, डेफिशिएंसी होता नहीं है। बट डेफिशिएंसी कैन ऑकर इन द सीवियर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन अगर हो गया आपको, सोडियम का डेफिशिएंसी होता है। डेफिशिएंसी के सिम्टम हो गई फटीग, कोई वीकनेस हो जाता है। डेली 5 to 10 gram okay, of sodium is required, okay? So it is fulfilled through table salt and salt in food. Potassium, it is again content of intracellular fluid, याद रखना है, sodium is an extracellular cation, potassium is an intracellular cation, again required for acidic base balance, osmotic pressure and muscle. If there is a deficiency of potassium, muscle weakness is there and mental confusion is there. 3 to 4 gram per day, it is a daily required allowance. Found in the fruits, nuts and vegetable. फ्रूट्स में होता है, नट्स में होता है, वेजिटेबल में होता है। क्लोरीन, अगेन क्लोरीन इट रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ HCl in the stomach, that is required, okay? Also it is required for the neuromuscular transmission, chlorine ions in hyperpolarization organism, okay? Almost the deficiency is unknown because it is provided through a normal diet, 5 to 10 gram per day. Table salt, that is a good source का है table salt. Sulfur, sulfur is a component of amino acids. तो amino acid होता है, आपको इसके बाद में वही देखेंगे amino acids. So it is a component of sulfur containing amino acids, also found in the vitamins and other compounds. So deficiency is unknown. Deficiency is unknown. So source क्या है उसका sulfur का? Sulfur containing amino acids. So then these are the elements, their biological role and their deficiency disease, deficiency symptoms and their source. Okay? Next we'll see again another elements known as a first one is a iron or iron. So iron or iron is a content of hemoglobin. आपका जो खून होता है ना, मतलब वो वाला खून नहीं, आपका खून मतलब ब्लड है ना। आप बोलते हो बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, है ना। तो वो जो खून होता है उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन। सो आयरन इज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आल्सो मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मतलब क्या, मायो मतलब, मायो जहाँ पे आएगा उसका मतलब होता है मसल्स, मायो मतलब मसल, मसल प्रोटीन में भी होता है। इट इज अ मसल प्रोटीन, कंपाउंड ऑफ मसल प्रोटीन। साइटोक्रोम फंक्शन, इट्स फंक्शन इज नथिंग बट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अगर डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब क्या है, कलर। किसका कलर भाई, तो आपके आरबीसी का कलर कम हो जाए। हाइपोक्रोमिक डिक्रीज इन द कलर ऑफ आरबीसी। माइक्रोसाइटिक, माइक्रो मतलब क्या, फिर कम, साइटिक मतलब क्या, सेल साइज। तो माइक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी श्रिंक हो जाए, कम हो जाए। ओके, हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक एनीमिया। रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना है, 10 to 15 मिलीग्राम पर डे, 10 to 15 मिलीग्राम पर डे, है ना। एंड इफ देयर इज अ पॉइजनिंग ऑफ आयरन, that which occurs most commonly in the children, what is the antidote, anybody? What is the antidote for iron poisoning? Desperoxamine. Desperoxamine. Again, desperoxamine is given orally and inject. Okay, it is given intravenously. Desperoxamine is a intravenous. Okay, and oral antidote क्या है मालूम है आपको? I have given in the book. It's given by IV. Desperoxamine. It is a iron chelator. So I have already taken. उसमें अपन ने देखा है, there are 2-3 antidote. तो ओके, जब आयरन पॉइजनिंग हुआ है उसमें बोला है मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। So desperoxamine is given by intravenous route. It is an iron chelator, but another are also there. Another 2 antidotes are there. So which is given by oral route. Found in the meat, liver, हार्ड लिपी, ग्रीन लिपी वेजिटेबल एंड आयरन यूटेंसिल, है ना। गांव में देखो, है ना, रोटी कहाँ पे पकाते हैं, तवे पे पकाते हैं पहले गांव में। अभी भी गांव में रोटी तवे पे ही पकाते हैं। सर अब आप बोले सर हम क्या फिर मटके पे थोड़ी पकाते हैं, अभी तवे पे पकाते हैं। लेकिन आपका तवा कौन सा है, कोटेड है, कोटेड। आपका तवा नहीं है, आपका अभी तवा इज रिप्लेस्ड बाय पैन। आपका जो पैन है वो सब ब्लैक ब्लैक से कोटेड है। सो उसमें आयरन नहीं मिल रहा है आपको। गांव में देखो, गांव में क्या होता है कि मॉर्निंग में उसका जो ईट होता है, ईट ईट मतलब घर बनाने वाला ईट,
ब्रिक्स बोलते हैं उसको। तो ब्रिक्स से ही उसको घिसते हैं मॉर्निंग में, ब्रिक्स से उसको क्लीन करते हैं वो तवे को, और वाटर और ब्रिक्स। उसमें क्या होता है, तवे में थोड़ा 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 जंग लगता है, और उसके ऊपर ही पकाते पकाते रोटी बनाते, सब्जी जो भी चपाती बनाते हैं, तो उसमें का जो आयरन है वो आपकी फूड में आ जाता है। सो दैट्स व्हाई गाँव के लोगों को एनीमिया नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज कॉपर। कॉपर अगेन micro mineral content. It is a content of enzyme like cytochrome C oxidase, catalase, tyrosinase, iron transport. Also role of copper, iron transport में भी copper का role है. So if there is deficiency, it results in the anemia and Menkes disease. Menkes disease. 2-3 grams per day is the daily recommended allowance. कहाँ पे होता है ये, मीट में होता है ना, मटन वगैरह खाते हो तो उसमें ये आते हैं. Cereals, iodine. It is a component of your thyroid hormone T3 and T4. T3 को क्या बोलते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन. T4 को बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन. T3 मतलब क्या, ट्राई आयोडोथायरोनिन. ये मतलब क्या, ट्राई, और मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन. So deficiency of iodine results in the cretinism, goiter and maxim. So 150 to 100 microgram per day is required. So it is supplied through iodized salt. आजकल क्या है ना, इसमें है आयोडीन, ये है आयोडाइज्ड, लेकिन कितना क्या, पूरा आयोडीन थोड़ी है उसमें. उसमें होता है 0.1% आयोडीन. देखो आप सॉल्ट का जो पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट. क्यों, पहले जो सॉल्ट था उसमें आयोडीन ही नहीं मिल रहा था, उसमें आयोडीन नहीं मिल रहा था पहले सॉल्ट. पहले जो लोग है वो सब जो रॉक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट वो यूज करते, सिंधा नमक. बाद में ये गवर्नमेंट ने जैसे जैसे उसका सी सॉल्ट जो होता है, सी सॉल्ट का इन्वेंशन हुआ, और कुछ कुछ जगह पे आयोडीन का कमी था, उसकी वजह से वाइटर वगैरह हो गए, तो फिर गवर्नमेंट ने ये आयोडाइज्ड कंपल्सरी किया, आयोडाइज्ड सॉल्ट. नेक्स्ट होता है मैग्नीज. मैग्नीज इज अ को फैक्टर फॉर एंजाइम एंड डिफिशिएंसी इज अननोन. सो व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट, 2 to 9 milligram per day found in the cereals and vegetables. नेक्स्ट होता है जिंक. Zinc is a cofactor for enzymes like alcohol dehydrogenase, carbonic anhydrase, lactate dehydrogenase. उसके लिए जिंक लगता है. Okay. Deficiency of zinc result in the growth retardation, overwhelming and hypogonadism. Also zinc is very important for your immunity. Growth retardation होता है deficiency होगा तो, overwhelming and hypogonadism. Zinc is very very important for your immunity as well as your हार्मोन सिंथेसिस, है ना. तो देखो जिसमें भी अभी आजकल जो मार्केट में दवाई आता है बहुत, इसमें है जिनसिंग, इसमें है अश्वगंधा, मुसली पावर, है ना. कौन सा पावर होता है क्या मालूम, उनको ही मालूम है ना. और फिर कुछ नहीं होता, बस वो सिर्फ वैसे दिखाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ले लो ना. अश्वगंधा, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, मुसली पावर, अल्टीमेट क्लाइमैक्स टैबलेट. कुछ भी नहीं है उसमें. उसमें क्या है, अश्वगंधा है, मूसली है, और थोड़ा बहुत जिंक है, सेलेनियम है, बस हो गए. उसमें उनको पावर देगा, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल होता है. वे बस बेचने के लिए कुछ भी बोलते हैं, है ना. जैसे ये बोलते हैं अभी डॉक्टर अनुष्का शर्मा, है ना. आप टीवी ऑन करो या फिर कोई भी मूवी देखना, मतलब यूट्यूब पे देखो, फटाक से 10 मिनट के बाद में आएगी, आउट ऑफ एवरी 2 months 1 woman इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन डिफिशियंसी. लगे उसके बाद में धीरे से एक बॉटल दिखा दिया आपको सेंट्रम. मतलब उनको पूछे यार कहाँ से आपने एमबीबीएस किया है, एमडी किया है, डॉक्टर अनुष्का शर्मा. वैसे ही थे डॉक्टर अक्षय कुमार आते हैं कभी कभी, तेल ले लो, है ना. डॉक्टर जूही चावला आती है, बालों को घना बनाएगा, अपने टकले पति को दे देते, उसका क्यों नहीं हो रहा है बाल. मतलब कुछ भी बेचने के लिए कुछ भी करते लोग. मेरे को सबसे इरिटेशन तब होता है बेचने के लिए कुछ भी नहीं बोलने का. जिसको लेना है वो लेगा प्रोडक्ट. हाँ, आपका काम क्या है, आप बोलोगे हमारा हमारा ये प्रोडक्ट है, केश किंग हमारा प्रोडक्ट है, जो आपको बालों में हेल्प करेगा बढ़ाने में, बोल दो. मतलब कुछ भी 10 दिनों में फर्क देखिए, का फर्क कुछ नहीं होता है. ओके. सो रिमेंबर जिंक इज अ को फैक्टर फॉर
alcohol dehydrogenase, carbonic anhydrase, and lactate dehydrogenase. So deficiency is the poor wound healing, hypogonadism, and growth retardation. So requirement कितना होता है 10 to 15 milligram per day. So found in the meat, fish, and milk. Are you getting or not? समझ रहा है क्या? Are you getting? Next is a molybdenum. Next is a molybdenum. Molybdenum. It is a component of xanthine oxidase enzyme. Component of xanthine oxidase enzyme. So deficiencies are known 75 to 250 microgram per day. It is a trace element. ये इसको क्या बोला हम trace element क्योंकि इसका microgram में लगता है trace element. Now it is found in the vegetables. Okay. Cobalt. So it is a component of vitamin B12. You know that cobalt is centrally placed, okay, and also required for the formation of erythrocytes. So अगर erythrocytes नहीं बनेंगे तो क्या होगा? Pernicious anemia. अगर कोबाल्ट नहीं तो विटामिन B12 डिफॉल्टी बनेगा और उसके कारण क्या होगा? Pernicious anemia. So pernicious anemia is a deficiency. Okay? And it is found in the food of animal origin. जो मीट वगैरह होता है इसमें कोबाल्ट 5 to 8 microgram per day is the daily recommended allowance. Fluorine, proper formation of bones and teeth. Fluorine is required for proper formation of bone and teeth. So deficiency is in the dental caries. Enamel खराब हो जाएगा. Osteoporosis 2 to 4 nanogram per day that is required. क्योंकि ये toxic होता है. It is found in the drinking water. Selenium, important होता है selenium. Is an antioxidant along with the vitamin C. Also it constitutes a glutathione peroxidase enzyme and selenocysteine amino acid. Selenocysteine amino acid क्या होता है? Anybody? मालूम है आपको? Anyone? Can tell me what is the selenocysteine amino acid? Remember there are 20 amino acids. 20 amino acids are there in the nature. So which are mostly found in the protein. That's why 20 amino acids they are known as a standard amino acids. They are known as the standard amino acids. But recently 21 amino acid is found. 22 amino acid is also found. So normally 20 amino acid होता है नेचर में जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स क्योंकि वही अमीनो एसिड रिपीटेड होता है प्रोटीन में. बट क्या होता है कि रिसेंटली 21st अमीनो एसिड इज also be discovered and 22nd amino acid has been also discovered. तो 21st अमीनो एसिड जो होता है ना दैट इज सेलेनोसिस्टीन. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एक बार तो ये अपन अमीनो एसिड में भी देखने वाले हैं. 21st अमीनो एसिड क्या है? सेलेनोसिस्टीन. Am I audible to you? 21st अमीनो एसिड इज नथिंग बट द सेलेनोसिस्टीन. नाउ आप बोलेंगे सर 22 कौन सा है? एनीबडी मालूम है आपको? एनीबडी? 22nd अमीनो एसिड. This one is known as 21st amino acid. Selenocysteine is the 21st amino acid. 22nd amino acid is a pyrrolysine. 22nd amino acid is a pyrrolysine. There are 20 standard amino acids, but recently 2 more amino acids has been discovered. 21 is known as selenocysteine, and 22nd is known as a pyrrolysine. Deficiency of selenium causes muscular degradation and cardiomyopathy. 50 to 200 microgram per day is a requirement daily. Found in the meat and seafood. चाइना वाले इसका डेफिशिएंसी कभी होता नहीं होगा. साला कुछ भी खाते हैं वो है ना. कीड़े मुकड़े केकड़ा है ना कुछ भी ऑक्टोपस पिक्टोपस कुछ भी खाते हैं. मतलब देख के ही गिना दी. मैं भी नॉनवेज खाता हूँ लेकिन वो जो खाते हैं खतरनाक. देख के ही खतरनाक. नेक्स्ट होता है क्रोमियम. Chromium is important for insulin function as a glucose tolerance factor. Chromium is a glucose tolerance factor, important for insulin. Okay? अगर deficiency होता है impaired glucose tolerance है ना. Normally impaired glucose tolerance अगर deficiency होता है 10 to 100 microgram per day लगता है ना. It is found in the brewer's yeast, meat, whole grains इसमें भी होता है. Next is the last slide of today's session. So minerals their function. तो कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट उसका फंक्शन क्या है? दे आर द रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चर. जैसे कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर द बोन फॉर्मेशन, फॉस्फेट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द बोन फॉर्मेशन, राइट. कैल्शियम, chromium, iodine, magnesium, manganese, sodium, potassium, they have a regulatory role in the hormone regulatory role
in the hormone action, and they are having other role also, regulation of neuronal transmission, regulation of your muscular transmission, calcium जैसे होता है, potassium. Now cobalt, copper, ferrous, molybdenum, selenium, and zinc. They are the prosthetic groups for enzymes. Selenium, vanadium, nickel, and tin, they are essential, but their function is unknown. बाद में aluminium है ना, aluminium, arsenic, a lead, boron, boron, then bromine, cadmium, lead, silver, caesium, mercury, and germanium. So their function is not known, it is unknown, okay, but they are present in a very small amount, okay, and they are toxic in nature, but they are toxic in excess. Fluoride and lithium, they have effect in the body, but essentiality is unknown. They are required in the body, but essentiality